Hello students, welcome back to my channel Computer Science for All. So today's topic is our Unit 5 Green Skills. In this unit, we have divided the unit in two sessions. One is Environment Protection and Conservation and the other one is Green Economy. So today we are going to discuss about environment protection and conservation. Objectives of this unit is environment and ecosystem, basic needs of living organism, relationship between man and environment, ecological imbalance and conservation of natural resources. So let us see first what is environment. Environment किसे कहते हैं? So if I talk about environment term is derived from a French word environ which means surrounding. So environment का मतलब होता है whatever is there in our surrounding. May it be the air we breathe, the water that covers the earth surface, the plants, the animals around us, and everything that surrounds us is known as environment. Now, when I talk about environment, environment is again categorized into two parts. One is a natural environment and दूसरा होता है हमारा man-made environment. Natural environment means which is not artificial, whereas man-made environment की अगर मैं बात करूँ तो man-made environment होता है जो भी हमारा artificial environment होता है, artificial surroundings होते हैं, like the things that are made by man. जैसे कि मैं बात करूँ buildings की, dams, or I can say the houses that is built by man, that is also the man-made environment. Now when we talk about natural environment, then natural environment is again categorized into two parts. One is the non-living environment and one is the living environment, जिसको हम biotic और abiotic भी बोलते हैं. Biotic means living and abiotic means non-living. So non-living environment, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास आ जाता है वाटर, एयर, जो भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं हमारे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में. एंड लिविंग एनवायरनमेंट मींस द प्लांट्स, द एनिमल्स, द इंसेक्ट्स, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स कम इन द लिविंग एनवायरनमेंट. अच्छा, तो अब बात करते हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट की. सो नेचुरल एनवायरनमेंट एज आई सेड is categorized into two parts. एक होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा होता है हमारा एबायोटिक. सो बायोटिक कंपोनेंट्स वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, इवन एनिमल्स. दीज ऑल आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि केमिकल्स, जैसे कि वाटर, लाइट, विंड, सॉइल, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स. यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन है स्लाइड में ऑलरेडी. सो दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. नाउ we talk about human made environment. Human made environment किसे कहते हैं? Human made environments as we discussed in the previous slide also, human made environment का मतलब होता है हमारी वो environment जो human ने बनाए हैं, like houses and buildings, parks and bridges, and roads, markets, factories, dams, etc. These are all the parts of the human made environment. इसको हम कहते हैं human made environment. जो भी human beings के द्वारा बनाया गया है environment, उसको हम human made environment बोलते हैं. Next term जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, that is the very important term that is known as the ecosystem. Now इकोसिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो इकोसिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैं बात करूँ एक पॉन्ड की. एक पॉन्ड के अंदर एक लिविंग मैटर भी होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द लिविंग कंपोनेंट्स लाइक वी हैव फिशेस, इंसेक्ट्स, एंड इफ आई टॉक अबाउट द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, अगर मैं एक पॉन्ड की बात करती हूँ तो वहां पे वाटर होता है, वहां पे इवन सनलाइट भी आती है, वहां पर वाटर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. देन वी हैव एयर आल्सो इन द पॉन्ड, राइट.
सो वो सारी चीजें जो एक पॉन्ड में एक लिविंग बीइंग्स को मिलती है, वो सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। सो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक छोटा सा सिस्टम होता है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विच आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड विच आर इंटरडिपेंडेंट। जैसे कि अगर मैं फिशेस की बात करूं, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द मिनरल्स इन द वाटर, राइट। मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, दे आर डिपेंडेंट ऑन, दे नीड एयर, सनलाइट, राइट, टू मेक देयर फूड, टू कैरी आउट photosynthesis which are incorporated by the plants, right. So by feeding on the plants on one another, animals play a very important role on the movement of matter and energy through the system. So ecosystem is nothing but it is a combination of, it is a community of living and non-living organisms where they are interacting with each other and they are interdependent on each other. That is known as the ecosystem. So ecosystem के अंदर हमारे पास autotrophs भी होते हैं, we have heterotrophs and we have the non-living matter. Next, we talk about the basic needs of living organism. What is the basic needs of all the living organism? If I talk about us as a human being, what are the basic needs that we need? The basic needs of a human living organisms are air, sunlight, water. Water is very much required, sunlight, and food, and the most important thing is air, obviously, and habitat with a right temperature. That is much required by all the living organisms, because everybody needs, everybody cannot survive in every kind of the temperature, so they need an environment or an habitat which is having a right temperature according to the body of the living organism. So now we will discuss about the relationship between man and nature, how man and nature, they are interdependent on each other, how the human beings impact the environment and how the environment is also impacting the human beings, because these both are the interrelated things. Because if I talk about, for example, if I talk about overpopulation, how is related to soil erosion. Now when I talk about overpopulation means the human being population is increasing. Because of the increasing population they need habitat, और habitat के लिए वो क्या करें? We are cutting the forest, we are cutting the number of trees, और अपनी habitat को बनाने के लिए we are, you know, destroying the natural habitat of the animals who are living in the forest. And that is why somewhere sometimes the animals, they are moving to the cities because their natural habitat is getting destroyed. So that is how the environment and, you know, the human beings, they are interdependent on each other. The activities that are done by the human beings have a great impact on the environment. So soil erosion क्यों होता है? Because of, you know, deforestation. We are having the problem of soil erosion, right. So we are only waste management हमारा जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है. We are not recycling the things, we are not and also because of that our fertile land is also getting converted into deserts. That is you know, known as desertification. We are getting the environmental disasters, like we are having floods, right. And floods again happen because of, you know, soil erosion also. So then we have the water pollution. So that is how the man जो है वो इस तरीके से resources को use कर रहा है कि he is not focusing on the sustainable development also. Like we are using resources in such a way that, you know, we will not be, you know, able to give anything to our future generations. So that is very important, that we need to take care of the environment, and that is how the environment is going to take care of us, right. So next let us see the climate change. कैसे climate change जो है affect कर रहा है हमें, and how, you know, human actions are also increasing the greenhouse gases. So when I talk about climate change, all of us know कि हमारे जो Antarctic के ऊपर है, we have got an ozone hole, because of which, you know, the ultraviolet rays of suns, they are coming directly on Earth, and even it is increasing the
temperature of the earth. If we talk about last decade, our earth's temperature has been increased by 3 degree Celsius. 3 degree Celsius हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हमारा जो CO2 लेवल है एनवायरमेंट में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, right? Because of that, and not only CO2, the other greenhouse gases as well. So that is how the climate is getting affected, because we are creating the pollution, we are burning the fuels, we are over exploiting the resources. Because of that, we are facing the climate change. We are having the warmer oceans, the rising oceans, we are having shrinking glaciers. The glaciers in the Arctic and Antarctic sheet, they are melting away. अगर वो सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, द वाटर इज गोइंग टू कवर द एंटायर अर्थ एंड नोबडी इज गोइंग टू सर्वाइव. सो ये सब इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए कि हम सब एक स्टेप लें टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, towards saving the environment. So we should take care of all these things. We should be using the resources whenever it is required, whenever it is necessary. We should not waste the resources. And now even the government is taking so many steps, right? So we have to follow the rules, like no plastic. We should not be using plastic, as it's non-recyclable, right? So we have to take care of all these things, otherwise the climate change is going to impact the entire human population. Next we talk about ecological imbalance. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की जब मैं बात करती हूँ, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो मेरे इकोसिस्टम के बैलेंस को बिगाड़ता है, और विच कैन हार्म द इकोसिस्टम, और विच कैन थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम. जैसे कि मैंने एक पॉन्ड की बात करी, अगर एक पॉन्ड में वाटर जो है वो बहुत हाई लेवल तक पॉल्यूट हो जाएगा, सो इट विल हार्म द एंटायर ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन द पॉन्ड, राइट? सो अगर मैं उस वाटर को रिस्टोर कर दूं, इफ आई रिस्टोर इट टू द ओरिजिनल कंडीशन, देन द इंसेक्ट्स और द organisms, they are going to survive. But there are many other harm in the life forms which can destroy the ecosystem and which can harm it to a great extent. So there are various factors that are causing the ecological imbalance. So let us understand some of the factors. कुछ factors को हम discuss करते हैं. What are the different factors which are actually harming the environment? So first and foremost is over exploitation of natural resources. Now what do you mean by over exploitation? Over exploitation का मतलब होता है ओवर यूज करना रिसोर्सेज को. अगर मैं अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रही हूँ, बहुत ज्यादा, इफ आई टॉक अबाउट द बिगेस्ट एग्जांपल इज लाइक वी आर कटिंग सो मेनी ट्रीज. अब हमें पता है कि अगर जो हमारा पेपर होता है, इफ आई टॉक अबाउट resources, our paper, we are using so much of paper, and paper is made up of wood pulp, and we are cutting so many trees. So even we have to understand that we don't have to waste paper, because if we are wasting paper, we are over exploiting the trees, right? So these things are resources are used in such a extent that it is almost reaching the stage of exhaustion. The resources are going to get exhausted one day if we keep on using at such rate. So we have to take care of all these things, and we have to stop the over exploitation of the natural resources. Next we have the habitat destruction. So as I said, we all are clearing the forest. हम forest को cut कर रहे हैं, trees को cut कर रहे हैं. उससे क्या हो रहा है, हमारा जो बहुत सारे animals हैं, plants हैं जो forest में होते हैं, उनका जो environment है वो habitat जो है पूरा destruct कर रहे हैं हम. We are destructing their natural habitat. So that is why the animals are also moving to the cities, because we are only the people who are destructing their habitat. So we have to, this is also one kind of ecological imbalance. Next we talk about the pollution. We all know that environmental pollution can cause a great impact on our ecosystem. When I talk about environmental pollution, I talk about the water pollution, I talk about land pollution, water
right? All kinds of pollution come in the category of the environmental pollution. So we have to take care of all these things, and we have to take steps to reduce the environmental pollution and make our environment a better place. नेक्स्ट हमारा आता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन. सो जो हमारे गैसेस होते हैं, बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस कौन से गैसेस होते हैं? are the basically gases which trap the heat, and that is why like CO2, like CFC, नाइट्रोजन, लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और इन सबको हम CFC गैसेस बोलते हैं बिकॉज दीज आर दी गैसेस विच ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर. So what happens because of these CFC gases, we are even the temperature of the entire earth is getting increased. So that is why we say that we have to decrease the amount of greenhouse gases, because it is causing global warming, and because of the global warming only even we are having the ozone hole, the ozone layer which is protecting the entire earth. हमारा जो ओजोन है उसमें उसकी जो लेयर है वो बहुत थिन होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच इज कॉजिंग द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूक्लियर वेपन्स और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं. अगेन दे आर ऑल्सो कॉजिंग द ecological imbalance, because even when I talk about a single nuclear weapon, तो एक अगर मैं एक सिंगल न्यूक्लियर वेपन की बात करती हूँ तो इट कैन हैव अ मिलियन टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव पावर देन एक नॉर्मल जो हमारा कन्वेंशनल वेपन होता है उससे. सो इवन बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, राइट? So if अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन बाय मिस्टेक एक्सप्लोड हो गया तो it will have a great impact on the entire climate and in the environment, and it can even destroy the life on earth. So we have to take care of all these things, because nuclear weapons are countries for their security purpose. But we can just imagine a case कि अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड होगा तो उससे कितना एनवायरनमेंट को हार्म हो सकता है. और उसके बाद जब हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो जो भी वेस्ट हमारे पास जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट, बिकॉज even if we are exposed to radioactive waste, they can have a health effects on human beings which can even result in the if you say अगर मतलब इतना ज्यादा उसका इफेक्ट होता है कि वो हमारे DNA को भी हार्म कर सकता है. So we have, this is also one of the factor that is really disturbing the ecological imbalance. Next we talk about, now we have talked about कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कैसे होता है. अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं. वी हैव ऑलवेज heard about this thing, reduce, recycle and reuse. 3 R's. We have to follow the 3 R's. We have to reduce the use of non-renewable resources. Then we should reuse the things that are possible to reuse, and we should recycle the things. Now from 3 R's we have moved to 5 R's. What are those 5 R's? सबसे पहले हमने reduce की जगह क्या किया? refuse. जैसे कि now we are even saying no use of plastic, means refuse the use of plastic. अब उसको कम भी नहीं करना, reduce की जगह हमें रिफ्यूज करना है. हमें जिस चीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करें. लेकिन फॉर एग्जांपल प्लास्टिक यूज करे बिना भी मेरी लाइफ चल सकती है, राइट? सो आई कैन रिफ्यूज द यूज ऑफ प्लास्टिक. रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, recycle and rot. Even we also say like the vegetables, जो हमारा green waste होता है उसको हम rot करके उससे हम manure भी बना सकते हैं. So these are the 5 R's which can lead to zero wastage in the environment, and it can have a great good impact, positive impact on the environment if we follow these 5 R's. So children, you all should follow these 5 R's and 5 R's rule, right? नेक्स्ट आता है हमारे कुछ टिप्स टू रीयूज थिंग्स, कैसे हम चीजों को रीयूज कर सकते हैं. जैसे कि पेपर की बात करूं तो वी कैन राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, ड्रिंक फ्रॉम द ग्लास और रीयूजेबल स्टेनलेस स्टील कप्स इंस्टेड ऑफ थ्रो अवे प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक और थर्मोकोल प्रोडक्ट्स. यूज क्लॉथ टॉवल्स, नैपकिन्स की जगह हम टिश्यू यूज करते हैं बहुत ज्यादा, उसकी जगह पे हम अपने क्लॉथ टॉवल्स यूज कर सकते हैं. यूज स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स और रीयूजेबल लंच बैग्स to carry lunch to school. So you should carry steel containers instead of reusable lunch bags. You should always carry steel
containers. Do not throw your old clothes. जो भी आपके old clothes हैं, furniture है, toys है, you should not throw these things. Rather, you can donate it to somebody who actually needs it. And then you should develop environmental friendly habits, जैसे कि proper handling of waste and refrain from using polythene bags. We should always refrain from using the polythene. Next, we talk about the essential steps that we can take to save the environment. So we should use less electricity. जब भी हम अपने रूम में नहीं है या फिर हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं, so we should always turn off the lights and appliances whenever they are not in use. बल्ब की जगह पे हम एलईडी या सीएफएल यूज कर सकते हैं. जो भी देन वी ऑल नो दैट emission from cars are harmful to the environment. So whenever it is possible we can take a walk. अगर मुझे किसी nearby place पे जाना है तो instead of using my car I can walk the distance, or even I can use cycle instead of driving. So जहाँ पर भी required है मैं carpool use कर सकती हूँ या public transport से use कर सकती हूँ, because उससे environmental pollution कम होगा. Practice rainwater harvesting. We can even have the rainwater harvesting system at our home. Encourage afforestation. हम सब trees plant करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, and we should contribute as much to the conservation of the environment that happens in our locality. So use alternative. अगर हम कार भी लेते हैं, so instead of diesel and petrol we can have CNG in vehicles, right? It is not the responsibility, very important factor, कि ये गवर्नमेंट की या फिर किसी बड़ी बड़ी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि they take the steps to conserve the environment, because every one of us should participate in protecting and preserving the planet for ourselves and our future generations. तो हम सबके लिए important है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, बिकॉज द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक अ चेंज until and unless we do something. So that is the most important thing, that we have to make a change. So that was it about the environment and conservation of environment chapter. In next video we will see what is green economy and how does it impact the the entire population. So thank you so much children, and I hope that this video is going to help you for the exams. We are also going to discuss some questions related to this chapter in the next video. So thank you so much for watching.